Good morning, all of you. Today we are discuss about displacement measurement, which is in the your syllabus. And this converts displacement measurement. This converts a mechanical displacement input into an electrical output. This is accomplished by changing the effective length of the conductor across the which output is measured. In this simplest form, device that consists of a selected resistance at the wire and the slider. Or the slider maintains an electrical contact with wire and move upon it. The effective resistance is existing between either end of the wire and the brass becomes the measure of a mechanical displacement. This type of device can be used only for relatively in a large displacement. एक्चुअली तुम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट मेज़रमेंट का मोटो जो है वो मैंने अभी तब बोला। और जो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट मेज़रमेंट करने के लिए हम लोग ज़्यादातर जो तरीका अपनाते हैं वो रेजिस्टिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ज़्यादातर करके हम लोग यहाँ पे एट फर्स्ट रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में वी आर फर्स्ट डिस्कस अबाउट द resistive transducer. The resistive transducer is the familiar the potentiometer or the port in the common एक फोटर प्लानर्स। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, यहाँ पे देखो ये जो इस तरह का जो भी पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे जो डिस्टेंस जो है जहाँ पे भी रहेगा तो यहाँ पे जितना भी वहाँ पे दिखाई इतना यहाँ पे जितना भी रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग डिवाइस जो है, ये जो डिफ्लेक्टिंग डिवाइस जो है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को मालूम पड़ेगा जो यहाँ का जो वोल्टेज जो है, जो यहाँ के जो वोल्टेज जो है, यहाँ पे जो वोल्टेज का जो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हम लोगों को एक वोल्टेज तो हम लोग देंगे बाहर से और एक वोल्टेज तो हम लोग देखेंगे जो क्या होता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो ये है रेजिस्टेंस एलिमिनेट्स द provided with a movable contact. The motion of the contact can be translated at rotational or at helical, which is the combination of two former motion, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटेशनल और रेजिस्टिव जो ट्रांसड्यूसर जो है, ट्रांसड्यूसर तो तुम लोग जानते हो जो तो जिसका इनपुट कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है, बट आउटपुट क्वांटिटी जो है वो है होगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगा। तो कंस्ट्रक्शन इज potentiometers are generally constructed in three forms. The single slider wound and सिरामिड, ये सब इन तरह का होता है। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एक्चुअली ये तो टाइप ऑफ पोटेंशियोमीटर के जैसे है, तो इसका एडवांटेज जो डिसएडवांटेज जो है ये सब कुछ हम PDF बनाकर तो तुम लोगों को भेज देंगे। तो इसका जो एडवांटेज जो है इनएक्सपेंसिव एंड सिंपली टू सेटअप, एंड एडवांटेज का दूसरा जो पॉइंट है रैदर लार्ज डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड। थर्ड पॉइंट इज सफिशिएंट आउटपुट
टू ड्राइव द कंट्रोल सर्किट्स। फोर्थ जो एडवांटेज जो है वो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड रेजोल्यूशन लिमिटेड फॉर द वायर्ड वुंड बट अनलिमिटेड फॉर अदर। ये सब तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है ना, मैकेनिकल द लोडिंग द वेइंग टू वेपर और द फ्रिक्शन, ये तो एक है। दूसरा पॉइंट जो है इलेक्ट्रिकल नॉइस फ्रॉम द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। थर्ड पॉइंट इज द वायर एंड miscellaneous alignment and weighing tooth friction. Fourth point is the quick the manipulation on the generator or the heat and the associated problems. Next, we are discuss about the very important section एंड वेरी 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 जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुम लोग बोल सकते हो, ये तो एग्ज़ाम पे आता ही है, ठीक है। जो है एलवीडीटी है एक लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हो, ये इसको ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये ट्रांसफार्मर के तरह काम करेगा। एक्चुअली उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो है ट्रांसफार्मर के ऊपर बेस करके, ट्रांसफार्मर का जो फंडामेंटल जो लॉजिक है तो उसके ऊपर बेस करके, मतलब इंडक्टिव तरह का ये ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हो, ठीक है। बट क्या है ना, ये तो इसका जो इनपुट जो है इसको तुम डिस्टेंस को मेज़र करोगे, बट तुम्हें वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल कुछ क्वांटिटी से तुम्हें मालूम पड़ेगा जो ये कितना जगह कौन सा जगह पे है। जैसे देखो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे पिक्चर, ये जो पिक्चर है इसको ठीक से ड्राइंग इसका प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे क्या है ना, एक हॉलो सिलेंडर है, तो यहाँ पे एक मूवेबल जो कोर है, ये कोर एक्चुअली क्या है ना, कोर कहाँ पे होगा ये तुम लोगों को मालूम पड़ जाएगा। जो क्या है ना, ये जो देखो प्राइमरी साइड का ये मिडिल पे जो है ये प्राइमरी साइड का कॉइल है, दिस इज प्राइमरी साइड कॉइल एंड द सप्लाई द सब in this part the supply system connected in this part within this part, and the secondary system जो है ना दो, तो वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड इक्वली टू पार्ट्स हैं। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। सेकेंडरी पार्ट को हम लोग दो जगह पे इक्वली डिवाइडेड करके रख दिया है, और यहाँ पे ये जो एसी सप्लाई तो मिल रहा है, और यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड, एक साइड को हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो, और दूसरा साइड से जो वोल्टेज जो होगा वो तो उसको लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, बट इसका जो काम जो है, इसका इनपुट एंड आउटपुट हम लोग देखेंगे वो ट्रांसड्यूसर की तरह है। तो इसीलिए एलवीडीटी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका ब्रीफली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द एलवीडीटी इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद द वेरिएबल इंडक्टेंस द ट्रांसड्यूसर in the industry. It is an electromechanical device designed to produce an AC voltage output proportional to the relative displacement of the transformer and the iron core. The basic construction of the LVDT is shown in figure. It consists of the one primary winding and two secondary windings. Secondary winding are the identical in respect of their number or of turns and their placement on the both sides of the primary winding is sinusoidal voltage, that is an amplitude 1 voltage to 15 volt and frequency 50 Hz to the 20 kilohertz can be used to
the primary through 1 volt to the 2 kilohertz to 1 volt at 2 kilohertz to 10 kilohertz is the common the movable the core of a high microproduct produces the signals proportional to its displacement by changing the mutual inductance between the coils. Nickel iron alloy slotted longitudinally and they minimize the eddy current loss is normally used to construct the core. नेक्स्ट जो है वो है व्हेन द कोर इज इन द मिडिल पोजीशन। ये इधर देखो एक सेकेंड मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस करके बोल देती हूँ। तो यहाँ पे देखो जब यहाँ पे रहेगा तो उसके मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है ना, ये नाल कंडीशन डिटेक्ट करेगा। इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तब क्या होगा ना, यहाँ पे देखो ग्राफिकली तुम लोग इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इस कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है जो जब भी ये इधर जाएगा इस साइड, जब भी इस साइड पे जाएगा तो वोल्टेज का जो इंडिकेशन है तो वो इधर डिफ्लेक्ट करेगा। और जब भी वोल्टेज इधर डिफ्लेक्ट करेगा तब क्या होगा ना, मतलब इसका यहाँ पे हम लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा। तो ये कोड जो है, कोड सेक्शन जो है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली मेज़र करना होता है। तो ये है व्हेन द कोड इज़ इन मिडिल position is sinusoidal voltage of equal amplitude appears across the two semiconductors in figure 2, मतलब ये है। and if the secondaries are connected in series position and as is normally the case normally the case, these voltages cancel each other to produce the inal voltage। तो जो भी मैंने उस वहाँ पे बोला तो ये वही तरह का होता है। ठीक है, अच्छा और एक बात है यहाँ पे देखो, और विथ द displacement of core and on either side of the null the combined voltage of the semiconductors in case linearly undergoing a 180-degree phase shift while the passing through the null the output losses its the linear relationship with displacement beyond on the sum of the limits and this property in the restrict the range of the LVDT. The natural range is the form of the plus minus 10 micrometer to 10 millimeter. Advantage and disadvantage of the LVDT. Now we are discuss about this point. The LVDT advantage of LVDT is that linearly is that good to the 5 millimeter. Number 2 point is the output voltage is stepless and hence the resolution is the good 1 micrometer. Output 3 output is rather high, therefore order the intermediate amplification is not necessary. And the number 4 is the sensitivity and is high. And the number 5 is low power and low hysteresis device. Disadvantage is rather large threshold. Number 2 is affected by the stray electromagnetic field, hence the
proper shielding of the device is necessary. In the number 3 is the AC input generates the noises the for sensitivity is the lower at a higher temperatures. RVTT which is next point next transducer और next जो डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है जो ट्रांसड्यूसर जो है तो वह है आरवीटीटी एक ही बात है एलवीटीटी के तरह ही है वो इंडक्टिव टाइप का बिहेव करेगा और यहाँ पे देखो आरवीटीटी का ये एक्चुअली रोटेशनल रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर इसको बोल सकते हो और यहाँ पे एक्चुअली ये रोटेशनल जो पॉइंट है रोटेशनल डिवाइस को ये डिनोट करेगा। यहाँ पे देखो और भी एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके दिया हुआ है, ठीक है। जब ये जो पार्ट है ये जब इधर रहेगा और इधर रहेगा तब क्या होगा ना वोल्टेज का ऐसे ही यहाँ पे जैसे ग्राफ आता है तो उधर ऐसे भी ग्राफ आएगा और जब ये मिडिल पे जब रहेगा ना तब क्या होगा ना मिडिल पे वहाँ पे नल कंडीशन पे यहाँ पे बिलोंग करेगा। तो ये रोटरी आरवीटीटी क्या है ना द रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल transformer is used to measure rotational angles. It works on the LVDT principles whereas the LVDT uses a cylindrical iron core. The RVDT uses a rotary form the ferromagnetic magnetic core. A symmetric is the shown in figure. जो फिगर पे जो है ना ये जो है ना तो यहाँ पे हम लोग देख लिया। अच्छा उसके बाद जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रो द मैकेनिकल डिवाइस द बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ द reductance the synchronous as a measure angle or perform the functions related to angle and the measurements such as the remote control of angle or the computation of the rectangular component of the vectors. A synchronous consists of a wound rotor and a wound stator are arranged concentrically so that the motion of the rotor potential is a variable and natural and the inductance between the two windings has single the rotor is laminated has a single phase winding and is connected to supply lines through the precision sleeve fairings while the stator winding is the three phase the phase being a displacement by the 120 degree in space. And so the synchronous are mostly used to compare the angular position of a load with its common dead position and to generate and appropriate the feedback such that the variation is connected automatically. Such automatic motion and the controlled feedback and get the system called the servo mechanism. This is पूरा दिस इज़ आरवीटीटी का जो शॉर्ट नोट आएगा और आरवीटीटी से जो भी क्वेश्चन आएगा देखो यहाँ पे और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत यहाँ से आता है जो आरवीटीटी का फुल फॉर्म आरवीटीटी का फुल फॉर्म इसका काम क्या है और एक बात है जो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वहाँ पे जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है इसीलिए 180 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे 120 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये सब होता है।
फिर जाकर हम लोग को देखेंगे डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट का और एक तरीका है, और एक ट्रांसड्यूसर है जो है एडी करंट ट्रांसड्यूसर। जो एडी करंट ट्रांसड्यूसर जो है, एडी करंट के ऊपर बेस करके, ये भी एक तरह का इंडक्टिव प्रोसीड्यूर है, एक तरह का इंडक्टिव प्रोसीड्यूर है। दिस इज द इंडक्टिव sensor eddy current for displacement distance and position measurement transducer inductive sensor from a micro the Westphalian are based on the eddy current principle and designed from non-contact measurement of displacement and the distance, position, on the oscillation and variation. They are particularly suitable when high precision is required in hertz, hertz in industrial like equipments, जैसे प्रेशर, the temperature and such that, and the inductive sensor from a micro epsilon the offer also the extremely precise is the measurements of where the sub-micron the accuracy it's required। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो व्हाट इज़ द एडी करंट ट्रांसड्यूसर कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट ऑफ ऑब्वियसली दिस इज़ अ इंडक्टिव सर्किट। सो ये नॉन कॉन्डक्टिव हो सकता है, तो नॉन कॉन्डक्टिव मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड पोजीशन और द फेरोमैग्नेटिक एंड नॉन फेरोमैग्नेटिक materials for demanding industrial environments that जैसे डिस्टेंस, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब ये यहाँ से मेज़र कर सकते हो। हाई रेजोल्यूशन एंड टेम्परेचर स्टेबिलिटी इसका है। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड फॉर ऑन द फर्स्ट मेजरमेंट इसका है। customer or specific sensor and controllers, the robust and the industrial grade sensor design। So the and next जो है वो है the versatile से applications of the possibilities that due to उन कंपेरिजन प्रोड्यूस रेंजेस जो है। यहाँ पे देखो, ये जो पिक्चर जो है ना, यहाँ पे पिक्चर ऐसे ही कोई एडी करंट एंड ट्रांसड्यूसर का पिक्चर, ये छोटा सा पिक्चर इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो नेट पे भी मिल सकता है, लोग देख भी सकते हो वहाँ पे, बट मुझे लगा ये छोटा सा एक सर्किट डायग्राम है, तो यहाँ से और भी अच्छी तरह से यहाँ इसको लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यहाँ पे जो एडवांटेज है वो ये है नॉन कॉन्टैक्टिंग है, तो मेजरमेंट हाई रिस्पॉन्स रेजोल्यूशन है, हाई फ्रीक्वेंसी में रिस्पॉन्स है। और जो डिसएडवांटेज जो है वो एक्चुअली जो है जो रैदर लो रेंज है, दूसरे के हिसाब से ये लो रेंज का है। और नंबर 2 पॉइंट्स इज द डिसएडवांटेज इज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इज द नॉन लीनियर एंड टेम्परेचर डिपेंड्स through the absence through a balance hence the coil can compensate for the temperature the effect. The non-linearity has to be appropriately taken care of. Number 3 is the works the only on only in the on conductive material
with sufficient thickness cannot be used for detecting the displacement for the non-conductive materials or the thin metal falls. तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट का कुछ तो जो भी तुम लोगों का सिलेबस पे ये सब है, तो ये सब मैंने बोला तो तुम लोगों का ये सब पीडीएफ भी मैं भेज दूँगी, ये नोट का नोट, ठीक है।